We're going to continue with esters a bit, and we had started doing. I mean, you can try this one: methanoic acid and propanol. Just a quick recap and revision for how were esters formed. So methanoic acid. I mean, most of you did this correctly. Most of you did this correctly, if I remember correctly. It's methanoic acid and propanol reacting together. So what's going to happen is that there is methanoic acid. It only has one carbon atom, right? So it has one carbon atom, and it is double bond O and OH, and there's going to be one hydrogen as well. And propanol is three carbon atoms, so it's one, two, three. I said the OH has to be. I mean, you have to draw the functional groups in front of each other. So there is going to be two hydrogens over here, two over here. Then there would be three on this carbon atom, and that's your molecule. And you're going to have the OH would be lost and the H would be lost. They're going to form water molecules. Okay, so an alcohol and a carboxylic acid are going to react, and there's going to be a condensation reaction. A water molecule is going to be produced, and with that water molecule, let's push it aside. What's going to be produced is that I'm going to draw the whole thing again. And the other one was, you can draw the whole thing again except for this part, which is that the OH and the H are going to be lost, as I stated earlier. So remove that part. And the oxygens and the carbon, I mean, they're short of one bond, so they're going to come together and they're going to bond with each other. And they're going to form a bond in between, and that's going to be known as your ester. It's going to be known as your ester link. Okay, that's your ester link. And this is the whole entire reaction. ठीक है, is this clear to everyone? सबको clear है? साथ clear है? Is this clear? Did you attend the Yes, yesterday's sir. class? Can you explain this again? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ना कि अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? What's going to happen is कि मैं एक जनरल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एस्टर्स बनते थे जब आपके पास है यू हैड एन अल्कोहल. अब अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल इज समथिंग, इट्स समथिंग, आर इज, कुड बी एनीथिंग, इट्स समथिंग विद आर इज द कार्बन चेन, समथिंग विद एन ओएच. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते थे? इट्स सम कार्बन चेन विद दिस फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच. ठीक है. अच्छा, वैसे तो यूजुअली इसको हम उस तरह ड्रॉ करते थे इस डायरेक्शन के अंदर, राइट? इट्स कार्बन विद डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच. वो भी वही चीज है, बस उल्टा करके ड्रॉ किया हुआ है. अच्छा, सो you have these two molecules. उसके अंदर what you have to do is you're supposed to what you're supposed to do is कि एक दोनों molecules के जो functional group है ना, alcohol और carboxylic acid, उनके जो OH है ना वो आमने सामने हो. अगर वो आमने सामने होंगे तो एक का OH रिमूव कर दो, दूसरे का H. ठीक है. So H would be removed from one of the alcohol, and the OH would be removed from the carboxylic acid. अच्छा, ये मैटर नहीं करता, एंड रिजल्ट वही होगा. अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किसका एज जाएगा किसका ओएच जाएगा, इट डजंट रियली मैटर, एंड रिजल्ट वही होगा. तो आप इनको बीच में से रिमूव कर दो. ठीक है. ओएच और बीच में से वो उन्होंने वाटर बना दिया, और ये दोनों आपस में जाके दे गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड दे गोइंग टू लिंक अप. ठीक है. इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को ना एस्टर लिंक कहते हैं. इज दिस क्लियर? Yes. तो ये हमने काफी एग्जांपल्स किए थे कि you could have butanoic acid, which is carboxylic acid with 4 carbon atoms. You could have ethanol, which has an OH. तो इसका OH और इसका H बीच में से गायब कर दो, और ये जो ऑक्सीजन होगा ना, ये वाला, ये जाके जुड़ जाएगा सीधा इस कार्बन के साथ. तो ये वाला ऑक्सीजन सीधा इस कार्बन के साथ जुड़ गया.
बीच में ये सारी चीजें हट गई हैं। वही चीज यहाँ पे हुई है कि there was a carboxylic acid serial bond over OH and an alcohol over here which is OH. तो बीच में से H और OH हट के, और अगर वो हट गए तो ये ऑक्सीजन जाके it will connect with this carbon atom. तो ऑक्सीजन will connect with this carbon atom. खैर अभी और एग्जांपल्स करते हैं, some more difficult ones. For example, I have a molecule of propan 2-ol, and I want propan 2-ol to react with ethanoic acid. ठीक है, now they're going to form an ester. Carboxylic acid and alcohols they combine to form an ester. Conditions भी होती थी इसकी कि वैसे ही नहीं ester बना देंगे. There have to be suitable conditions for this. The conditions for the formation of ester were that you needed concentrated sulfuric acid and reflux. मतलब ये conditions must है. It's a condensation reaction. Water molecules are produced. ये forward reaction की बात कर रहा हूँ, ठीक है? So these conditions need to be present. Otherwise, an ester is not going to be formed. So going back, propan 2-ol and ethanoic acid. Now, the problem with propan 2-ol is, okay, propan 2-ol is, the OH is on the second carbon atom. It's over here. अच्छा, इसके साथ 3 H होंगे. इसके साथ there would be 1 H, and over here there are going to be 3 hydrogens. ठीक है, so this is propan 2-ol. अच्छा, I'm going to draw ethanoic acid. That's 2 carbon atoms. Double bond O and OH. And there are 3 hydrogen atoms over here. Now the thing that's going to happen is that I have previously told you कि जो functional group है ना, they should be facing each other. So this is your alcohol. Oh, sorry, this is your carboxylic acid, and your alcohol is somewhere over here. So they must be facing each other. So how do I make them face each other? One way to do that is I have to rotate one of the molecules. तो इसको पकड़ो and start rotating it so that it faces that. मतलब the functional groups must face each other. तो इसको थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं. I mean CH3, write it, उसको सीधा करके लिख लेते हैं CH3. This is CH and OH, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं. So it's CNH and there's an OH group attached to it. And this is also CH3. So अच्छा, so is this part clear? Mahad, is this clear? Anna, Sidra, is this clear? Yes, sir. अच्छा, so बाकी the rest of the part is the same. ठीक है, remember this, okay, the alcohol could be positioned anywhere, the carboxylic acid could be anywhere. You have to bring the two molecules together such that the carboxylic acid and the alcohol are both facing each other. और फिर क्या होगा? बाकी काम आसान है कि the carboxylic acid would lose its OH, the alcohol would lose its H, and the two are going to get together and they're going to link up, forming an ester link. So beach में ना there's an ester link now. Is this clear to everyone? Ahmed, is this clear? Saad, clear है? Yeah, sir. Yes. So this is your ester link. अच्छा, we can do another molecule. Let's say एक और इस तरह का example कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल. For example, there is. अच्छा, so for example, there's a molecule which is ऐसे ये molecule है, और इसके साथ there's an alcohol, और दो molecules हैं alcohol के. ठीक है, let's say CH3OH है. मतलब CH3OH इसका मतलब है methanol, but there are two molecules.
ये दोनों आपस में मिलके एस्टर्स किस तरह फॉर्म करेंगे? ये क्या करेंगे कि आपके पास इसको उठा के बीच में रखो। एक मेथनॉल का जो मॉलिक्यूल होगा ना वो इस साइड पे, उसको उल्टा करके ड्रॉ करना होगा। वो दे शुड बी फेसिंग ईच अदर। That's one methanol molecule. There's another methanol molecule. ठीक है, तो वो मैंने दो इसलिए ड्रॉ किए बिकॉज there's a carboxylic acid group on one side and there's a carboxylic acid group on the other side as well. इसलिए मैंने ऊपर ना टॉप पे two methanol molecules थे. Bring them together and they're going to react with each other. ठीक है, so you bring them together. The carboxylic acid would lose its OH, the alcohol would lose its H, and वो बीच में से निकालो और इनको आपस में कनेक्ट कर दो. ठीक है, so they're going to come together and they're going to join up and they're going to form this alcohol. Sorry, alcohol कह रहा हूँ, एस्टर बन गया. इधर भी वही होगा, OH किया, H किया, बीच में से निकाल दो, and they're going to link up and they're going to form they're going to form ester links. ठीक है, so your ester links are going to be formed in this way. ये क्वेश्चन क्लियर है सारों को? Is this clear? ये वाला Yes. ठीक है, बाकियों को भी. Sidra, is this clear? Yes. I said now one thing that we're going to try and do now is that we're going to try and learn how to name esters because we don't know how to name esters. Okay, this is something that we did not actually study. So we're going to begin naming esters, and remember we're going to only name simple esters, not complicated esters. Okay, that's not in your course. Very simple molecules are going to be named. So an ester has, this is the ester functional group. So this over here is the ester functional group. It's C double bond O. It's C double bond O, and there's an O over here, and there's a carbon chain over here. There's carbon, whatever, and there's going to be a carbon or a hydrogen atom, a carbon chain or a hydrogen atom on this side. I said, anyways, this central part is your ester functional group, right in the middle of the chain. That's your ester functional group. Now, how do you name the molecule? Is going to be named in two parts on either side of this chain. For example, if I pick an ester molecule and I have just one carbon atom on this side, there would be three hydrogens on this side. There would be two hydrogens on this side, and there would be three hydrogens on this side. Okay, so this is your this is a molecule of an ester. Now, draw an imaginary line in the middle, right in the middle. Break the ester link into two parts. The molecule is going to be named in two parts. This side has how many carbon atoms? It has a total of 3 carbon atoms. So that means 3 carbon atom, the name would start with prop. So it's meth, eth, prop, bute. So 3 carbon atoms is prop. On this side, you have a total of 2 carbon atoms. So 2 carbon atoms, the name would start with eth. Now remember that an ester is going to have two sides. One side is where there's a single bonded oxygen. The other side is there's a double bonded oxygen. So the single bonded oxygen, the name or the suffix would always end with -yl. So this side would be called propyl. जो ये single O वाली side नहीं है, that's called propyl.
और वो जो डबल बॉन्ड वाली साइड है ना, उसका नाम स्टार्ट तो H से होगा, but it would end with NO8. ठीक है, this is what it would end with. It would be ending with ethanoate. ठीक है, always. ये end वाला part ये याद रख लो. So it's going to be, and the name would be, uh, if you write it collectively, the while part is written first. So it's going to be propyl ethanoate. ठीक है, that's what it's going to be called. It's going to be called propyl ethanoate. तो इस पार्ट क्लियर, मैं जल्दी से रिकैप कर लूं कि यू सी एन एस्टर लिंक नजर आ गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके एक साइड पे देखो कितने कार्बन है, 3 है तो दैट्स प्रॉप, दूसरी साइड पे 2 कार्बन आटम, सो दैट्स एथ, और बाकी ये कि अगर ये सिंगल ओ वाली साइड है तो उसका एंड कर दो वाइल से, अगर डबल बॉन्ड ओ वाली साइड है तो उसका नाम एंड कर दो इनोवेट से, और दोनों को इकट्ठा कर लो, so propyl and ethanoate, so it's propyl ethanoate. That's the name of the ester. This is the name of this particular ester. Is this part clear? Mahal clear hai? Saad, Ahmed, Anna, Sidra, is this clear? Is it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So I'm going to try and name all the esters, not these ones. These are kind of complicated. You're not going to be asked. O levels के अंदर you're not going to be asked. ठीक है, मतलब बनाने को कह सकते हैं वो, ठीक है, but they're not going to ask you to name these. अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है. I'm going to try and name this ester. तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इधर ये बीच में मैं ये पॉइंटर अपना रख लेता हूँ, ठीक है. अब दिस इज द एस्टर फंक्शनल ग्रुप. राइट साइड पे कितने कार्बन है? 3 है, तो इसका मतलब है ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ना, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड प्रॉप. ठीक है, दिस साइड इज कॉल्ड प्रॉप, और इसके लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन एटम्स? देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम. 1 कार्बन एटम का नाम किससे स्टार्ट होगा? मेथ से. ठीक है, तो और ये सिंगल ओ वाली साइड है तो दिस वुड बी प्रोपाइल, वायल आ जाएगा. वो डबल बॉन्ड ओ वाली साइड है तो उसका नाम जो है वो एंड हो जाएगा O8 से. So the name of the molecule would be propyl methanoate. That is how you're going to name the ester. इस वाले पे आ जाओ, इधर बीच में ester link. इस साइड पे लेफ्ट पे कितने हैं? There's 2 carbon atoms, so this side is eth, 2 carbon atoms. So this side is eth. अच्छा, फिर राइट साइड इसके इधर 1 2 3 and 4, इसको भी काउंट करना राइट साइड पे, ठीक है. सो 4 का नाम किससे होगा? ब्यूट से. अच्छा, सिंगल ओ वाली साइड जो है ना, दैट वुड बी कॉल्ड वायल, सो इट्स इथाइल, और डबल बॉन्ड ओ वाली साइड जो है ना, दैट्स O8, butanoate. So the name of this molecule is ethyl butanoate or butanoate. इसका क्या होगा नाम? इसका नाम होगा राइट साइड एथ. ठीक है, सो राइट साइड इज, ऊपर लिख लेते हैं, दिस साइड इज एथ एंड दिस साइड इज प्रॉप. प्रॉप ही है ना, 1 2 3 3 कार्बन एटम्स on the left side. So there's eth and there's prop. And ये वाली साइड जो है ना, that's single O वाली साइड, that's while. This one is O8, propanoate. The name of the molecule would be ethyl propanoate. So that's how you're going to try and name esters. अच्छा, draw किस तरह करने के? Let's say I give you a molecule and I name a molecule, and you're being asked to draw the ester. For example, let's do part A. Let's say I'm asking you to draw methyl methanoate. So how would you go about naming this molecule? The way you're going to name this molecule is,
First, draw the ester link. ठीक है, it's an ester obviously, so there's an ester link. Make that imaginary division. ठीक है, imaginary है, ठीक है, असल में नहीं है ये. Don't make a line on the diagram. तो ये red line, think of it as an imaginary line. अच्छा, methyl means के ये जो YL वाली साइड होती है, YL वाली, that's the single O side. उसका मतलब है कि इस साइड पे एक कार्बन आटम है. Meth means one carbon atom. और इधर भी methanoate है, that also means one carbon atom. इसका मतलब है डबल बॉन्ड O वाली साइड पे भी there's only one carbon atom, which is already there. So you don't have to do anything. बाकी हाइड्रोजन ऐड कर लो. इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3. इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? there's going to be 1. तो इस लाइन को हटा दो, ये मैचिंग लाइन. ठीक है, that's going to be your ester, methyl methanoate. एक और कर लेते हैं कि let's say B ethyl pentanoate. ठीक है, so ethyl pentanoate. What is ethyl pentanoate? अब उसका ये कि अच्छा, उसका ये कि सीरियल बॉन्ड हो, और वो तो बीच में पहले डाल दो, और बीच में वो आप imaginary line draw, sketch that imaginary line. You're going to have eth 2 carbon atoms, pent 5 carbon atoms. So one side is 5 and the other side is the 2 carbon atom side is the single O side, ये YL. So this side is 2 carbon atoms, 1 2, that's it. Pentanoate is the double bond O side, 5 carbon atoms. So 1 is already there, 2 3 4 and 5. और बाकी हाइड्रोजन्स ऐड करते रहो. CH2 CH3 CH2 and this is CH3. So this is going to be, remove this. This is going to be ethyl pentanoate. Is this clear to everyone? Ahmed, clear? Is it clear? Yes, sir. तो अब एक काम ये करो कि नेमिंग भी करो, और फिर पहले नेम करो, ड्रॉ करो. So I'm writing questions. Methanoic acid plus butanol. First draw this, and once you are done with the drawing, try and name this. But you draw and name. Both things need to be done. ये 3 पहले करो, और फिर उसके बाद मैं सिर्फ I'm just writing the name. तो draw the structure directly. Do you start with the first one? अच्छा, पहले 3.
फर्स्ट वन ड्रॉ करो, मुझे सेंड करो, ठीक है? आफ्टर ड्राइंग एवरी क्वेश्चन सेंड मी अ व्हाट्सएप, उसके बाद पिक्चर भेज दो उसकी। अच्छा, इट्स बेटर टू हैव देम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है? सो जो OH का ग्रुप है ना, इट शुड बी ड्रॉन ओवर हियर। इज ये क्लियर है बात? और बाकी H ऐड कर दो, 2H। और क्या होगा इसका? OH और इसका H जो होंगे वो बीच में से रिमूव हो जाएंगे, और आपका C डबल बॉन्ड O जो है वो जाके कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो आपने सही बनाया था, सिवाय यहाँ पे देयर वाज एक एक्स्ट्रा H था। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको नेम किस तरह करोगे? ये एस्टर लिंक को डिवाइड करो, इधर क्या होगा? एक कार्बन आटम है तो मेथ, और 4 कार्बन आटम है तो ब्यूट। वो अगर काउंटिंग याद नहीं, मैं लिख देता हूँ। मेथ, 2 कार्बन आटम्स एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एक्स तक हम जा ही नहीं रहे, तो बस ये 1 2 3 4 5। और इसमें होगा कि ये सिंगल ओ वाली साइड है, तो दिस वुड बी वाइल ब्यूटाइल, और ये डबल बॉन्ड ओ वाली साइड है, दिस वुड बी मेथनोएट, ठीक है? दिस over here is going to be मेथनोएट, ब्यूटाइल मेथनोएट इसका नाम होगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, किसी ने स्काइप पे भेजा था, जस्ट 1 सेकेंड।